Okay, so good evening, students. Today I'm going to start the Payment of Gratuity Act 1972. Okay, so I have also taken this class before, so most of you may be very clear with it. So take it as a revision. Okay, so this act may be called the Payment of Gratuity Act 1972. First of all, what is gratuity? Gratuity क्या है? Gratuity is the amount which you get for your continuous service in the organization. Okay, it is a lump sum amount which you will get after working for certain period of time. Okay, it is kind of social security for you. Okay, so it is enacted by Parliament in the 23rd year of Republic of India, and it is applicable to whole of India, provided that in so far as it relates to plantation or ports, it shall not extend to Jammu and Kashmir. So when you talk about the Gratuity Act, the first thing which you have to remember is what is gratuity. Gratuity is a lump sum amount which you receive after vacating the organization, after leaving the organization, okay, for doing the continuous service in the organization, and it extends to whole of India except Jammu and Kashmir. That means Jammu and Kashmir में ये applicable नहीं है, right? And the act applies to certain specified establishment. कहाँ पे ये act apply करता है? Factory, mines, oil fields, plantation, port and railway company. ये सारी जगह ये act apply होती है, be it a factory, mine, oil fields, plantation, port or a railway company. Okay, now coming to the act applies to every shop or establishment in which 10 or more persons are employed on any day of the preceding 12 months. इसका मतलब क्या है कि ये एक्ट जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट एंड रेलवे कंपनी, अलोंग विथ इट कोई भी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट जहां पे 10 या फिर 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं इन प्रीसीडिंग 12 मंथ. सो द मेन थिंग टू बी रिमेंबर्ड हियर इज the act applies to every shop or establishment in which 10 or more persons are employed on any day of the preceding 12 months. It is specified by central government by way of a notification in the official gazette. और ये किसने specify करते हैं ये? Central government. It is specified by central government by way of notification in the official gazette. अब यहाँ पे ये एक्ट और कहाँ पे अप्लाई करता है? This act is also applied in a temple like Sri Jagannath Temple Puri etc. मीन्स ये एक्ट सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं, बट ये एक्ट even the big temples like Jagannath Temple Puri or the Tirupati Balaji, where huge number of employees are working and taking the wages or the salaries, this is also applicable in these temples, right? Now, if the provision becomes applicable once, the act shall continue even if the number of employee falls below 10. Means ये एक्ट मैंने कहा है कि मैंने क्या कहा, एक्ट ने जो कहा है कि जो भी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट है जहां पे 10 और मोर पर्संस काम करते हैं वहां पे एप्लीकेबल होता है. तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ 10 या 10 से मोर, बट इन बिटवीन काम करते करते इन बिटवीन से फॉर 3-4 मंथ्स के बाद अगर कम हो गया, बिलो 10 हो गया, दैट मीन्स एक या दो ने छोड़ दिया है और 8 या 9 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, फिर भी उसमें एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये इन बिटवीन हुआ है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आपने स्टार्ट किया था तब ये एक्ट में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे तो ये एप्लीकेबल होगा. अगर इन बिटवीन 10 से कम हो भी जाता है तो भी ये एक्ट उसमें एप्लीकेबल होगा. ठीक है, एन एम्प्लॉय इज एलिजिबल टू रिसीव ग्रेचुइटी इफ. अब एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी कब कब मिलेगा? द मेन एलिजिबिलिटी, व्हेन इज द एम्प्लॉय गोइंग टू गेट द ग्रेचुइटी? He is employed in the establishment where this act is applicable. ये कोई भी establishment में काम कर रहा है जहां पे ये act applicable है. Means be it factory, oil fields, mines, okay, any shop or establishment where 10 or more persons are working. सारे establishment में जहां जहां पे ये act applicable है वहां वहां पे क्या है, ग्रेचुइटी मिलेगा एम्प्लॉय को. और प्रोवाइडेड उसमें और एक कंडीशन फुलफिल होनी पड़ेगी, दैट इज ही हैज बीन इन कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years. उसको उस कंपनी में 5 years काम करना होगा, बिलो 5 years वाले को नहीं मिलेगा. ठीक है, नाउ coming to the next slide, who is the appropriate government here? According to section 2A, in relation to an establishment belonging to or under the control of the central government,
having the branches in more than one state, of a factory belonging to or under the control of central government, a major port, mine, oil field, or a railway company, the central government, and in any other case, state government. Means यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि कहाँ कहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और कहाँ कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगा. सो फर्स्ट थिंग है कि एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. कोई भी एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट होगा. कोई एस्टेब्लिशमेंट जिसके ब्रांचेस मोर देन वन स्टेट, सपोज वन एस्टेब्लिशमेंट इज देयर, इट हैज अ ब्रांचेस इन वेस्ट बंगाल एंड असम टू, that means it is operating in more than one state. So in that case also the central government is the appropriate government, and in case of major port, mine, oil field or railway company, the central government is the appropriate government. And apart from this, in any other case, state government is the appropriate government. So यहाँ पे तीन मैंने अलग अलग टेबल में क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है. Establishment under the control of central government, having branches in more than one state, central government, and major port, oil fields, railway company, central government, and in any other establishment, state government. I think I'm clear here. So moving ahead, now, what is completed year of service? Again and again, I'm talking about the continuous service. Okay, what is continuous service? What is completed years of service? इसको हम आगे डिटेल में करेंगे, because we need to understand the meaning of the continuous service for the calculation of the gratuity. Okay, for the calculation of the amount of the gratuity to be paid. Okay, and to whom we have to pay the gratuity. So we have to understand this term. So आगे I'll explain this in the further slides. Right now, you just understand completed years of service means continuous years of service. Okay. Then coming to employee, which is one of the important part here, according to section 2E, it means any person other than apprentice. Okay. Everybody, I think everybody is clear with apprentice. It means any person other than apprentice. That means apprentice is not included here. Who is employed for wages? जो भी पर्सन कंपनी में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अदर देन अप्रेंटिस, हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, जिसको किस चीज के लिए एम्प्लॉय किया गया है? वेजेस के लिए. एम्प्लॉयमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. Now, what is expressed and implied? Expressed means whatever things are written in the contract, which is mandate, or whatever you have discussed verbally. And implied means according to the suggestions or according to your mutuality, whatever things are being decided. Okay, expressed is something mandate which has already been there in the contract. Okay, so employment can be expressed or implied, and it can be manual or technical. In any kind of work, manual or technical, in connection with the work of a factory, mine, oil field, plantation, port, railway, company, shop, or other establishment to which this act applies. Okay, so I'm repeating it once again. Employee में यहाँ कौन include होगा? Any person who is working in the organization, whether his employment is expressed or implied, and he is earning wages. ओके, वो अपने काम के लिए वेजेस ले रहा हो, फ्री में नहीं कर रहा हो. ओके, इफ अ पर्सन इज वर्किंग इन फ्री, देन ही इज नॉट रिगार्डेड एज एन एम्प्लॉई. इन एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल और टेक्निकल वर्क, मैनुअल भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, in the connection of a work of a factory, mine, oil field, plantation, port, railway company, shop, or establishment to which this act applies. But it does not include any such person who holds a post under the central government or state government and is governed by any other act or rules. ये किसको include नहीं करता? Any person who is holding a post in the central government or a state government. Employee का जो definition है according to the Gratuity Act, it does not include any person who holds a special post in central government or state government and is governed by any other act or rules. जिसमें और कोई act या rule लगता है, ठीक है? If any act or rule is applicable in that organization, then the Gratuity Act is not applicable. तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि कहाँ पे include नहीं होता? Any वो पर्सन के ऊपर नहीं एप्लीकेबल होता इफ ही होल्ड्स अ पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेयर एनी अदर एक्ट और रूल्स आर एप्लीकेबल. आई थिंक आई एम क्लियर हियर. Am I clear? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So moving forward, now what is family here? You have to understand it very clearly कि family में यहाँ पे कौन कौन include होता है. If I talk in case of male employee and in case of female employee, first coming to male employee.
you can remember this in a way, you connect it to yourself. Okay, you take it yourself as an employee and correlate it, so you cannot forget what comes under the family. Okay, first of all, employee himself, that means you can connect it to yourself. Okay, you yourself, his wife and his children. Okay, the wife of the employee and his children, his dependent parents. Okay, his dependent parents of his wife. Okay, dependent parents of his wife and widow and children of his predeceased son. कहने का मतलब है कि फैमिली में यहाँ पे कौन कौन इंक्लूड होता है, एम्प्लॉय खुद तो इंक्लूड होता ही है, उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन, हिज डिपेंडेंट पेरेंट्स, ठीक है, मदर एंड फादर, डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ ऑल्सो. ओके, बोथ द साइड्स, एंड विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ हिज प्री डिजीज्ड सन. प्री डिजीज्ड मतलब उसका अगर डेथ हो गया है उसके सन का, और अगर उसकी विडो और चिल्ड्रन है, दो, वो विडो और चिल्ड्रन भी इंक्लूड होगी फैमिली में. ओके, now when I come to female employee, everything is same, only the difference is here, wife is included here, husband is included. Okay, so in case of female employee herself, her husband and her children, whether married or unmarried, her dependent parents of her husband, and the widow and children of her predeceased son. Okay, so here only the difference is wife and husband, other everything is same. Whether married or whether the girl, that means whether the female is married or unmarried, her dependent parents are included. Okay, so there is no question of the female being married or unmarried, the dependent parents of the woman are included. Okay, now coming to, but it does not include any HRA, bonus, commission, overtime, wages, and any other allowance. Okay, this is actually, I think the part of wages. It was a part of wages. By mistake, it is here. So you can skip this slide. Now coming to continuous service. कंटिन्यूस सर्विस मैंने अभी कहा था कि आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. कंटिन्यूस सर्विस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड सर्विस विच मे बी इंटरप्टेड. दैट मीन्स यू आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन uninterruptedly. Okay, but what are those, there are certain factors which may be interrupted. That means कुछ चीजें ऐसी है unavoidable है जिसको आप avoid नहीं कर सकते हो. It may be interrupted by those factors. That means by sickness, accident, leave, absence from duty, or break in service, which may be according to standing orders, layoff, strike, lockout, or cessation of work. कंटिन्यूस सर्विस मतलब आप कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो विदाउट एनी इंटरप्शन. सर्टेन फैक्टर्स है जो अनअवॉइडेबल है, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसके कारण इंटरप्ट हो सकता है. सपोज आपकी सिकनेस लीव है, सपोज कोई ड्यूटी से आपने कोई अर्जेंट वर्क के कारण कुछ एब्सेंस किया है, या फिर आपके कोई स्टैंडिंग ऑर्डर में ले ऑफ, स्ट्राइक के कारण, कोई भी और कारण से अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप मतलब बंद है ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क ड्यू टू ले ऑफ, स्ट्राइक, लॉकआउट और सेसेशन ऑफ वर्क, in that case what happens, these days are also included under the continuous service. Actually continuous service में ये जो भी unavoidable circumstances है जो avoid नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई accident हुआ, sickness हुआ, it cannot be avoided. Standing order में या फिर lay off, strike, lockout के कारण अगर बंद होता है, अगर आप काम में नहीं जा सकते हो, तो it cannot be avoided. That will also be counted as a continuous service. Now, not due to any fault of the employee. अगर एम्प्लॉय के फॉल्ट के कारण कोई काम पे नहीं आ रहा है, दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज एन कंटिन्यूअस सर्विस. ओके, कोई फॉल्ट के कारण इफ द एम्प्लॉय इज नॉट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ हिज ओन फॉल्ट, दैट विल नॉट बी counted as a continuous service, but those circumstances which are unavoidable will be counted as a continuous service. Now, when I talk about the continuous service, first of all I'll segregate the organization into seasonal establishment and non-seasonal establishment. Okay, सीजनल का मतलब आप सबको क्लियर है कि वो 12 महीने ऑपरेट नहीं करता. ठीक है, इट ऑपरेट्स ओनली ऑन द सीजन बेसिस. ठीक है, कुछ चीजें हैं जो सीजनल चलती हैं, इट इज ओनली इट वर्क्स ओनली ऑन सीजनल बेसिस, एंड नॉन सीजनल विच वर्क्स फॉर द एंटायर ईयर. सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सीजनल एस्टेब्लिशमेंट. ओके, ये आपने डिस्प्यूट वगैरह में भी पढ़ा है, इट इज द सेम. Okay, so when I talk about the non-seasonal establishment which works throughout the year, 190 days if the employee was employed below the ground in a mine or works for less than 6 days.
ठीक है. If I talk about complete 1 year, then 190 days if the employee was employed below the ground in a mine or works for less than 6 days, and 240 days in any other case. अगर below the ground का बात आता है, I think everybody is clear with this. ठीक है, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं. 190 days if the employee was employed below the ground in a mine or works for less than 6 days, and 95 days if the employee was employed below the ground in a mine. अगर 6 months के लिए आप बात करोगे तो 95 days, that means you don't have to mug up this, आप just इसका 50% कर दो. If you remember 190, then you will be able to remember 95. It is just 50%. Okay. Likewise इसमें जो है above the ground, when I'm talking about above the ground, it is 240 days in any other case and 120 days in any other case. That means above the ground, if I talk about 1 year, then it has to be 190 days service below the ground and 240 days above the ground. And if I talk about 6 months, then it has to be 95 days below the ground and 120 days above the ground. Am I clear here? Continuous service. Any doubt here? Anybody has a doubt here? No, ma'am. Okay. Okay, now coming to seasonal establishment. Okay, right now I was talking about non-seasonal establishment. Now when I talk about the seasonal establishment, in case of seasonal establishment, if he actually works for not less than 75% of number of days, अगर seasonal establishment होगा तो उसको कितना काम करना होगा? Not less than 75%. That means he has to work for at least 75% of the number of days. जितने number of days work होता है seasonal establishment, उसमें उसको at least 75% काम करना होगा. So I think now continuous service is clear to everybody. Okay. Now moving on to controlling authority. Okay, who acts as a controlling authority? The appropriate government may by notification appoint any officer to be a controlling authority who shall be responsible for the administration of this act, and different controlling authorities may be appointed for different areas. Controlling authority क्या होता है? Appropriate government may by notification appoint any officer, कोई भी officer वो appoint कर सकते हैं to be acting as a controlling authority, who shall be responsible for the administration, जो ये act के administration को देखेगा, and different controlling authorities may be appointed for different areas. Controlling authority क्या करेगा? ये act के सारे administration को देखेगा और different area के लिए different authority appoint हो सकते हैं. And who appoints the controlling authority? The appropriate government appoints the controlling authority. Okay. Now coming the eligibility. कब कब मिलेगा ये? मैंने आपको बताया था ग्रेचुइटी किस किस को मिलेगा. सो हियर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स. एलिजिबिलिटी फॉर अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी. An employee shall be eligible to receive gratuity if he has rendered the continuous service for not less than 5 years. सबसे मेन पॉइंट है एम्प्लॉय को एटलीस्ट 5 years काम करना होगा. ठीक है. यहाँ पे कुछ क्लॉज है फॉर 4 years 9 months समथिंग लाइक दैट. वो मैं आपको when I'll come to the numerical part, that time I'll clear you. ठीक है. So if he has rendered continuous service for not less than 5 years, okay, on his superannuation. Now what is superannuation? Superannuation है क्या? Superannuation में क्या होता है कि you have a deal that you will be working for 10 years or 15 years or till the age of retirement. That means superannuation ka period is when will you vacate the position in the organization. ठीक है. What is the difference between superannuation and the retirement? Try to understand. Superannuation is a kind of contract जिसमें ये होता है कि आपको कब तक काम करके वेकेट करना है पोजीशन को. ओके. इट मे बी आफ्टर रिटायरमेंट. ओके, वो रिटायरमेंट के बाद भी हो सकता है और वो 10 years और 15 years और 5 years के बाद भी हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में. तो जब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस फुलफिल हो जाता है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज सुपरएनुएशन. और रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि योर रिटायरमेंट एज बी इट 60 और 65 और इट मे बी सम अदर एजेस अकॉर्डिंग टू सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो द मैम डिफरेंस. मैम या प्लीज टेल मी. मैम सुपर एनुएशन किसी भी एज पे ले सकते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी भी एज पे आप नहीं ले सकते हो. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सपोज व्हेन यू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव टेकन यू बाय लाइक गिविंग यू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 10 years, or they may have taken you till the retirement. Okay, so that is superannuation.
किसी भी एज पे क्या होता है कि अगर आपने 5 इयर्स से के बाद कंपनी जब भी छोड़ी, तब तो आपको ग्रेचुइटी वैसे भी मिलेगा। सपोज इफ अगर जो आप कह रहे हो किसी भी टाइम ले सकते हैं, दैट इज यू आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज राइट नाउ यू आर वर्किंग इन टीसीएस, ओके, नाउ यू गॉट अ जॉब इन सम अदर कंपनी, ओके, सो यू आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 5 इयर्स, तो वैसे भी आपको ग्रेचुइटी मिलेगा टीसीएस से। बट अगर आप 3 इयर्स या 4 इयर्स में ही छोड़ दोगे तो आपको ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। अब आया सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन इज समथिंग लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कि आपको 10 साल 15 साल या रिटायरमेंट के बाद छोड़ना ही है, कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुछ नहीं कहा है, रिटायरमेंट के बाद आप छोड़ रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू गेट योर ग्रेचुइटी। ओनली द डिफरेंस इज व्हाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट द years विल बी कंसिडर्ड। अगर आप 20 साल के बाद छोड़ रहे हो तो आपको 20 साल के ऊपर ग्रेचुइटी मिलेगा। अगर आप 5 साल के बाद छोड़ रहे हो तो आपको 5 साल के ऊपर ग्रेचुइटी मिलेगा। Am I clear here? Am I clear here? Yes, ma'am. Yeah. Now Yes, ma'am. coming, yeah. Now coming to resignation, जो अभी मैंने बताया, suppose if you are giving a resignation after 5 years, then also you'll be getting this thing, gratuity. Okay. Now, suppose in case of death, completion of 5 years is not necessary in case of death or disablement. अब suppose ऐसा कोई unavoidable circumstances है, that means suppose you are working in a company since 3 years and suppose the employee die. In that case, or there is any disablement to the employee, in that case all the 5 years period will not be considered, उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा, you will not be checking the 5 years of period, okay, you will not be considering the 5 years of period, okay. And coming to disablement, जो मैंने already बोल दिया है आपको, due to accident or any disease, कोई भी एक्सीडेंट हो या कोई डिजीज के कारण अगर छोड़ना पड़े तो इन दैट केस द 5 years थिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओके। और अगर किसी का डेथ हो जाता है या डिसेबलमेंट हो जाता है, ग्रेचुइटी शैल बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय नॉमिनी और द लीगल हेयर्स ऑफ द एम्प्लॉय, ओके। इन दैट केस ग्रेचुइटी किसको मिलेगा? एम्प्लॉय ने किसको नॉमिनी बनाया है और उसके कोई लीगल हेयर, ठीक है। इफ द नॉमिनी और द लीगल हेयर इज माइनर, अगर नॉमिनी या लीगल हेयर माइनर है, देन द अमाउंट शैल बी डिपॉजिटेड विद द कंट्रोलिंग ऑथोरिटी। देखो यहाँ पे दो तीन चीजें समझने की है। कैन यू म्यूट योरसेल्फ, जिसने भी अनम्यूट किया है? या या थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग था ग्रेचुइटी कंटिन्यूस सर्विस, 5 इयर्स के कंटिन्यूस सर्विस में मिलेगा, ठीक है। ऑन हिज सुपर एनुएशन, ऑन हिज रिटायरमेंट, ऑन हिज रेजिग्नेशन, ऑन हिज डेथ, डिसेबलमेंट, एक्सीडेंट और डिजीज। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डेथ, डिसेबलमेंट, एक्सीडेंट और डिजीज में 5 इयर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड, ये याद रखना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज, अगर किसी का डेथ होता है तो ऑब्वियसली द person will not come to receive the gratuity, so in that case his nominee will come to receive the gratuity or the legal heirs of the employee will come to receive the gratuity, okay. अगर नॉमिनी माइनर है, सपोज अ पर्सन इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और उसका एक बच्चा है जो कि माइनर है, ओके, सो इन दैट केस द ग्रेचुइटी अमाउंट कैन नॉट बी गिवन टू द माइनर। in that case the amount will be deposited with the controlling authority and controlling authority वो माइनर को वो पैसे कब दे देगा? on the completion of 18 years of age, ठीक है। when will that minor be getting that amount of gratuity? when he will complete his 18 years of age. Am I clear here? Okay, so coming to the next, Yes, ma'am. yeah, coming to the next slide. uh, how will you calculate the amount of gratuity? There are different cases, okay. So today what's the time? Okay, so today I'll discuss the first case. In case of employee not covered under the Gratuity Act, monthly rated employee, that means wo employee who are not covered under the Gratuity Act, monthly rated employee, the gratuity shall be payable at the rate of 15 days wages for every completed year of service or part thereof in excess of 6 months. Wages means the last drawn wages. Days in a month means 26 days. Therefore, the amount of gratuity in case of monthly rated wages, जो भी मंथली बेसिस में काम करते हैं उसके लिए है ये 15 divided by 26. Number of days you will not be taking 30 days, you will be taking 26 days only, ठीक है। The formula here is, अच्छे से देख लो इसको, I'll be continuing this in my next class also. 15 by 26, okay, 30 days नहीं लोगे आप, you will be taking 15 days, 15 by 26 into last drawn wages. What is your last drawn wages? Last drawn, आप जब आपने छोड़ा था तब आपका last drawn wages क्या था?
into number of completed years of service. आपने कितने years of service complete किया, और part thereof in case of 6 months. ठीक है, तो आपने पूरे ईयर में अगर 6 मंथ्स के लिए बात करोगे तो आप 6 मंथ्स के हिसाब से लोगे, और इफ यू टॉक अबाउट 1 ईयर, then you will be taking, I'll be teaching you numerically, then you will be understanding it in details. Okay, so today you just know about this. In case of the employee not covered under the Gratuity Act, that is monthly rated employee, 15 by 26 into last drawn wages into number of completed years of service or part thereof in case of 6 months. So today I'll be doing this much. Okay, tomorrow I'll be continuing the class. Okay, tomorrow I'll continue the class. I'll be taking the class tomorrow also, and the numerical part here, the calculation part here, I'll be discussing it tomorrow, because it will be very lengthy right now. So I'm stopping my class here itself, right? So thank you so much, everybody. If any doubts, you can come up with your doubts. I am there in the class itself.